ठीक है. So I think can you see my screen now? दिखाओ जी. Again, sir. Okay. ठीक है. So let's begin with today's class. Actually, it's a very short topic, and with this we will end chapter 2 today. Then I will take up chapter 3 after your UGC CSE prelims. Okay. Chapter 3 jहाँ से we'll take 3-4 classes more. Then we'll finish chapter 3. So initially ଆମେ research विषୟରେ discuss କରିଥିଲୁ. So these are introductory part of research. That research is the systematic study of a chosen subject matter to arrive at new and valid conclusions. Social sciences research केमते use है. So I'm sure that most of you know by now what is research. Specifically what is research in social sciences. Okay. Now this part we are going to focus today different types of research. Okay. So देखो कितने type of research अच्छी that depends on what is your purpose, what is your main purpose. Okay. So purpose of research, if the purpose is to establish cause and effect relationship among the variables, that is generally experimental research. Means experimental research रे हमें usually cause and effect relationship establish करी परिया हमें confidently कही परियो कि X factor पे Y होच. Okay. Otherwise, for example, descriptive type of research. Descriptive research रे तमें कही परियोनी cause effect relationship establish कर परियो नहीं, because that is also not your goal. Right? Similarly, exploratory research ର ମାନେ କଣ? Explore କରିବା. ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଯାହା ଉପରେ ଆମର କିଛି ବେଶୀ କିଛି knowledge ନାହିଁ ତା ଉପରେ explore କରିବା. So we will begin some kind of research and maybe further research can be conducted on it. Okay. So exploratory research is to fill the gaps in our existing knowledge. ठीक ଅଛି. ସେମିତି pure research ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ୟାକୁ fundamental research କୁହାଯାଏ और basic research कुहाଯାଏ. Pure research का काम generalizations, right? You explain, in which you can explain a phenomena. So pure और basic research का काम होଉଛି theory develop करिया. So या एटा कौन कि यार practical application हमें immediately भावना हमें को बोलो we are trying to gain knowledge for the sake of knowledge itself. That is pure research. हमको जाना नहीं पौरे से knowledge का use रस करे. But when we were developing it, we are only doing it out of respect for that science, out of our curiosity to understand what is happening. सेमितिया तो तार ऑपोजिट टा कौन हो? तार ऑपोजिट हो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च माने प्योर रिसर्च जो थ्योरी वेरी बाहरी थी जहां भी हमर अंडरस्टैंडिंग बाहर थी इनसाइट्स आस्ती हो ताको हमें यूज करिया टू सॉल्व अ practical problem or to enable the researcher to make a decision. Right? For example, you are let's say you are trying to understand whether some kind of program is very effective or not, and on the basis of that research you are taking a decision whether to continue that program or not. Applied research, action research रो out के depth रे out के वामे बुझिया पड़ी action research रो काम हो. Very nice concept, action research, participatory action research, these are there. सेमितिया hypothesis को test करिया, descriptive research. Okay, कि there is an hypothesis and you want to test it. अच्छा, इधर मतलब ठीक लगा. It's not I'll check and I'll let you know. Okay, I'm not really doubt which I don't know how why I wrote this. Testing a hypothesis is there. You can do this in experimental research also. Descriptive research, experimental research, we can test a hypothesis. Similarly, we can also analyze different facts to critically evaluate existing material. That is analytical research. The critically evaluate existing material कौन भी हमने आगे भी देखी. So overall, यदि तुमको पचरा जाए कि what are the major goals of research? तो तीनटा main research रो goal अछि. गोटे होतला scientific. For example, जोटा यारो कौन example है परियो जिमती हला experimental research है ना, pure और basic research. Theoretical pure and basic है परियो है ना, analytical research है परियो. Then pragmatic goal कौन? Pragmatic goal होला जिमती है practical application हो होला. Applied research plus you also have participatory action research or participatory action research. So these are the three main goals of three types of goals: scientific, theoretical, or pragmatic. So ता अंडर रे हमें further subdivide कर पारी different research method. और तन actually तुम्हारो OPSC syllabus रे केवल तीनटा method ही लिखा है जी: descriptive, exploratory
and experimental. So focus on these three parts, but I have also given some extra material which will help you to consolidate, because see, descriptive or analytical, these are on the opposite end of a spectrum. They are not opposite to each other, but their purpose is different. Seମିତି exploratory or empirical purpose is completely different. Experimental evaluative very different. ଯେତେବେଳେ ଆମେ compare and contrast କରିକି ସେଟାକୁ ପଢିବା ସେତେବେଳେ basic ତାର idea ଟା ତୁମ mind ରେ consolidate ହେଇଯିବ. Otherwise I have highlighted these three types of research so that you can focus on these, because these are mentioned in your syllabus. यहाँ बाद जो गुड़ा अच्छी 4, 5, 6, 7, these are not actually mentioned in your syllabus. However, in questions related to chapter 2 and 3, if you write some points related to these types of research, then you will get more marks. For example, you got a generic kind of question what are the different types of research, or researcher goals, or how does research help sociologists? ସେଥିରେ କ'ଣ ତମେ କେବଳ descriptive, exploratory, experimental ତିନିଟା ଲେଖିଥାଅ ଯଦି ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇବ. If you also mention basic or applied research, quantitative versus qualitative, participatory action research, then you are going to get more marks. That is my objective here. Now ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, these are actually not opposite to each other. Okay, ଏଠି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି because ଦେଖ descriptive versus analytical ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି because they are at the opposite end of the spectrum, but does not mean कि exactly opposite ସେଇଟା. On the other hand, हमको बेले बेले कौन करियो दरकार पड़े, बेले बेले गोटे रिसर्च तुम जहाँ चूज करियो सेटा हे पारे हाफ डिस्क्रिप्टिव हाफ एनालिटिकल, इट मे बी हाफ एक्सप्लोरेटरी हाफ एम्पिरिकल. तो किसी धरा बंधा फिक्स रूल नहीं कि केवल हमको गोटे टाइप रो रिसर्च करियो पड़े. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर क्राइटेरिया, व्हाट इज योर सब्जेक्ट मैटर. फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट मैटर कोन सेतरे एक्सप्लोरेटरी ही हे पारियो बिकॉज़ आगुरु केबे सेतरे रिसर्च ही नाही. तो सेथि तुम जाई पहुंची पायो ना मु तटा एक्सपेरिमेंटल करी ही पारे ता ऊपर एती नॉलेज ही हमर बेसिक नहीं कि ता जहा ऊपर तुम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर करियो. So there is also constraint of the situation of the subject matter, so you have to take a lot of factors into consideration before making selecting which kind of research method you are going to choose. बुझी होची? Yes, sir. Yes, sir. Okay, किसी यदि न बुझी पारियो मते इमीडिएटली अटकेयो हला, then you can ask what does this mean. And second कथा होची कि usually purely quantitative, purely qualitative, or purely explanatory and purely longitudinal ए भलिया रिसर्च बहुत रेयर अछि. तो सब टाइप रो रिसर्च किछ ना किछ अन्य टाइप रो रिसर्च भी मिसी के थाइता. So for that reason don't think that we have to choose only one kind of research. Okay. So now let's come to the first type of research. हम देखिए descriptive research. Descriptive research नाम रू जाना पड़छि you are trying to describe something. So describe माने कौन करियो ना you want to accurately describe an existing state of affair of a social situation, social system, social structure, any social phenomena, anything. Social research रे anything that you want to study, you want to only, your purpose is only to describe it accurately. तो तुमको लगे कि description एत बड़ जिंस कौन अछि. प्रॉब्लम एटा कि आगुरु जहाँ भी ता ऊपर रिसर्च हेतियो और जहाँ भी लिटरेचर ता ऊपर लिखा हेतियो, it might not have been adequately जिंस को describe करा जी पन्ना चाहिए. There is a very nice statement about India. Okay. I'll tell you a very funny thing about the description. What is the pitfalls of description? ଗୋଟେ ବଢିଆ statement ଅଛି कि whatever correct thing you can say about India, the opposite would also be true. माने इंडिया गोटे एते वास्ट डाइवर्स कंट्री कि आमे जेते जहां भी गोटे ट्रू स्टेटमेंट इंडिया विषय रे कहबू तार ऑपोजिट भी ट्रू होई. फॉर एग्जांपल यू विल से कि इंडिया इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट पीपल. You can also say the opposite. India is also full of fools. है ना? You can say कि India has a lot of talent. India also has a lot of poverty. Everything. India has a lot of wealth. India also has a lot of poverty. So now in this situation, who can accurately describe India? So here you need some kind of description. Problem of description is there or not? Means जहाँ भी तुम्हें describe करियो, that will not be enough. So there is always scope for descriptive research. Okay? Descriptive research means to accurately describe an existing system. So it is a more generic example. In sociology, you can give examples of, let's say,
सपोज गोटे ट्राइबल सोसाइटी अछि तो ता ऊपर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आगरो किछि नाही मेन स्ट्रीम सोसाइटी रे बहुत ही बहुत ता ऊपर रिसर्च बट गोटे ट्राइबल सोसाइटी ऊपर ही नहीं तो यू कैन डू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑन दैट यू कैन डिस्क्राइब हाउ इज देयर लाइफस्टाइल हाउ इज देयर सोशल स्ट्रक्चर मैरिज रो इंपैक्ट कोन रोल कोन तांकर सोसाइटी रे जेंडर रोल्स केमती अछि बिकॉज़ हे पारे तांकर सोसाइटी रे जेंडर रोल टा रिवर्स हे दियो कंपेयर टू आवर्स लेट्स फॉर एग्जांपल आम सोसाइटी रे जदी पैट्रियार्कल डोमिनेंट आम सोसाइटी अछि हे पारे कि समानकर मैट्रियार्कल सोसाइटी सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विल वर्क देयर बट एथिरे गोटे जिंस नोटिस करो कि एथिरे तुम जहां भी पढियो लेट्स से कि आमे डिस्कस करिया चाहू छु गोटे ट्राइबल सोसाइटी रे जेंडर डायनामिक्स कोन अछि एबे कथा हला तुम जहां भी स्टडी करियो भाबो जेंडर डायनामिक्स जहां भी स्टडी करियो इट हैज ऑलरेडी हैपेंड करेक्ट it has already happened since years and you are studying what is already existing phenomenon ko hi ame study korchu so there is a limitation in this in the sense that unlike other kinds of research for example experimental research em short re tum kohchi experimental research re kon kara experimental research re basically tum ame kon karibu independent variables am katha padhilu iv1 iv2 so on and so forth ताको आमे मैनिपुलेट करियो माने चेंज करके देखियो थरे कोन करियो IV2 को फिक्स करके देखियो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कोन बाहरुची तापर IV1 को फिक्स करके IV2 देके चेक करियो कि DV टा कोन डिपेंडेंट वेरिएबल टा कोन बाहरुची so you have this opportunity to actually manipulate change and see what is the outcome or effect so cause को तो आमे चेंज करके देखिया कि इफेक्ट कोन आछी then only you will be able to establish a causal relationship cause effect relationship this is the logic but here unlike experimental research here you cannot actually change the variables एठी जा हवा कथा independent variable already है dependent variable जा हवा कथा सीए भी already है extraneous variable भी जा अछि ता ऊपर हमर किछि कंट्रोल नै so we are only studying what has already happened right so याको सेत में कहा जाय बेले बेले ex post facto research means ex post facto माने fact which has already happened post fact means fact he sarla pore ame jaha ko study kru so it merely studies the subject after it has already occurred means amaro kichi variables man ko upre control na ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଥାଟା ବହୁତ obvious may be କିଛି ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ still I am spending 2-3 more minutes to again explain this to you because ଏଇ point ରେ ମତେ ପୁଣି ପରେ ପଚାରିବା ନାହିଁ କି ସାର୍ ଏଟା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ because experimental research ର method ଟା ଯଦି କଣ ବୁଝି ପାରୁ ନାହଁ then it will be very difficult for you to understand the other types of research okay this is remember this is a very unique kind of research एथिरे हमें causal relationship establish करि पार एबे यारो मतलब कोन हमें आउथरे तुमको बुझाउ try to understand very carefully listen very carefully एबे सपोज जणे कोन कहला कि जणो पचराले कि अच्छा हमर ओडिसा रे एते टैलेंटेड लोक केमिति अछि तो तार सॉल्यूशन जणे कहला कि मते लागुची जो लोक हम लोक माने पखाळ खाउचंती भी बहुत टैलेंटेड लोक अछि बट दिस इज अ हाइपोथेसिस हाउ कैन वी टेस्ट दिस हाइपोथेसिस हमें कोन करिवु ओडिसा रो किछि लोकन को नबु किछि लोकन को मासे पर्यंत पखाळ दउ आउ किछि लोकन को पखाळ जागा रे अन्य किछि खाया दउ लेट्स से भात दउ रोटी दउ जहा भी दउ नॉन पखाळ आइटम then what we will do ki we will test them both in a same standardized test and tankar score देखियो माने आउ तार एवरेज स्कोर देखियो लेट्स से यांकर एवरेज स्कोर x यांकर एवरेज स्कोर y is there any significant difference in x and y लेट्स से पखाळ खाउतो लोकंकर एवरेज स्कोर हला इंटेलिजेंस टेस्ट हो किबा जे कोन से टेस्ट हो लेट्स से तांकर एवरेज स्कोर हला 90% नॉन पखाळ वालांकर स्कोर हला 89% ताले हम कहबे हाइपोथेसिस टा रॉन्ग because 89% और 90% भितर बहुत बेसी डिफरेंस है बट भाबो से सेम एक्सपेरिमेंट हला 89% जगह एटा 65% बाहरला देन हम जानि परियो अच्छा पखाळ रो ताले कि छोटा महत्व अछि एठी पखाळ हला इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी और इंटेलिजेंस जहां तुम्हारा आउटकम हम देखु बुद्धिमत्ता जहां को हमें टेस्ट करे चाहू दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ओके आल्सो नोन एज इफेक्ट दिस इज द कॉज दिस इज एन इफेक्ट जेतले हम कॉजल फैक्टर्स को चेंज करके चेक करि परिबु कि यार इफेक्ट किछ कोन पडुची सेते बेले ही ना कॉज इफेक्ट उतर रिलेशन एस्टैब्लिश करि परिबु सेटा को हम कहया कॉजल रिलेशनशिप और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वर्तमान किंतु भाबो आ गोटे केस रे भाबो सब बेले ई जिंसटा करिया पॉसिबल होय नै यार कोन एग्जांपल देखो फॉर एग्जांपल हमें चेक करिया कि
कि गोटे सोसाइटी रे आमे फॉर एग्जांपल विल टेस्ट की whether the gender dynamics of a society, let's say what a patriarchal society is, okay, or matriarchal society is, this is due to what? This is due to the dominance of the same gender in that family, or sorry, in that society. So dominance of male. Now can we do the same kind of experimental experiment here? The same kind of experiment करिया पे हमको कौन करिया पड़ियो? हमको मेल किसी फैमिली नहीं कहया पड़े बाबू आपण माने एबे डोमिनेंट होंतु नाही, आउ किसी ग्रुप ऑफ फैमिली को नहीं कि मेल मानो कहबी नहीं आपण डोमिनेंट होंतु, तो एटा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नो ना। एबे हमें पखाळ को चेंज कर परिया माने खाଇବା को चेंज कर परिया, गोटे फैमिली डायनामिक्स हम चेंज कर परिया कि एक्सपेरिमेंट पे वर्तमान हमें हमर सपोज इंटरवेंशन पई ए फैमिली रे किसी झगड़ा लागि ए फैमिली टा भांगी गला, now that is also unethical. There is a lot of constraint in which you cannot do these kind of experiments. So here it is an ex post facto. Ex post facto means already jaha haba katha hi sarchi, male dominant society it has already happened, patriarchal society is, ame ebe kebol jai ki taku study kari pariya, ताको जाइके describe करि परिया ता विषय माने more information gather करि परिया, एठी हमें definitely causal relationship establish करि परिया ना। बुझी होची कोन कहया को चाहू? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so this is the meaning of ex post facto research. So descriptive research हमें generally descriptive research में कौन को methodology use करू? देखो these are only data collection and analysis method. Overall method टा हला research method टा हला type होची descriptive research, but data collection method can be different. So one of the data collection method is survey. So survey टा हला हमर chief data collection method. एथरे हमें कौन करियो? सर्वे माने हमें जाई कि लोकन को सिंपली पचारिबू, फोन करके डायरेक्टली फेस टू फेस पचारिबू, and we will gather information, then we are going to describe, use that information to describe their situation. So यार एग्जांपल कौन ही करियो ई टाइप रो रिसर्च? Let's say for example the living conditions of minorities in a society, religious minorities in their India, transgenders in India. So you will go there and you will do some survey and you are going to describe their society. Semithiya, prevalence of drug abuse in a certain group of people. Let's say truck drivers. Truck driver मान इतने ही बेसिक कहीं की drug abuse होची, तो कहीं सॉरी एठी कहीं की नो एठी you are here only describing कि हमें देखिली कि ट्रक ड्राइवर्स मान भितर बेसी देखिया मिलुची प्रेवलेंस कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। अदर ग्रुप्स माने कोन? नॉर्मल सैलरी जो माने सैलरीड जॉब्स करचंदी समान को भितर एते ड्रग अब्यूज नाही, फार्मर्स मान को भितर नाही, किंतु ट्रक ड्राइवर्स मान को भितर अछि। So when you do this kind of research, that is a descriptive research. यार what best case study you can write about ब्रानिस्लो मानिलोस्की जाइतले जो प्रोब्रिएंट आइलैंड, तो प्रोब्रिएंट आइलैंड रे जाइकी से बहुत जिंस डिस्क्राइब करछन, से एक्सप्लेन भी करछन बहुत सारा जिंस, बट ही हैज आल्सो डिस्क्राइब कि से सोसाइटी रे कोन होचिन कोन ना। सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बुझी होची? मालिनोस्की कोन फाइंड आउट करथले? यू टेल मी। आई थिंक आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द 10th टाइम राइट। What did Malinowski find in Trobriand Island? Sir, functional approach of a culture. Very good. Function of culture. Functionalist theory से देख ले। Okay. कि culture गोटे showpiece नो, culture गोटे काम गोटे हमरो objective को serve करूची बोली, गोटे purpose को serve करूची बोली से अछि। And actually हमें देखिया गले the purpose of culture is almost similar across different cultures. Okay. Surface level ले अलग लागू लेती, at the deep depth it is serving a similar purpose, that is the regulation of social behavior. Okay. Second type of research is analytical research. Now this is not given in your syllabus, so I'm going a bit faster on this. बहुत depth rate अगु जो नहीं तो syllabus में mention है। Analytical research कौन? Descriptive रो opposite spectrum रे अछि। एथरे बेसिकली हम कौन करिया? Existing facts और observation अछि, ताको analysis करके generalizations करे। So generalizations माने कौन? So basically you will bring out some law or principle, you will find out something which is for the general case, means exception को हमें consider करिया नहीं, हमें general case कौन होची ताको हम बात करिया। For example, in the previous case, drug abuse हम प्रथम describe कर देली कि truck driver और ये certain group रे ही बेसी prevalent अछि, बेसी drug abuse होची। But analytical research रे you will say कि why is it prevalent?
कहीं certain section of people रे ही prevalent अछि. So this is analytical research. So can you see that it is a step further from descriptive research? Can we say that? Yes, sir. Yes, sir. Right. So descriptive टा हला सबटु most basic type of research. ता टिके ऊपर level गुडा हला ये. Third हला exploratory research. Exploratory research माने कौन? Initially I had just mentioned कि exploratory explore means जो जगह टा आगुरु explore है नहीं हमें first time ପାଇଁ ସେଠିକୁ ଯିବୁ. So it is a research which is undertaken to break new grounds means ନୂଆ କିଛି ଆମେ କାମ କରିବା in hitherto unexplored subject matter ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା explore ହେଇ ନାହିଁ ସେଇ topic ଉପରେ. Okay. So that means what? That means कि researcher रो ही बहुत little knowledge ଅଛି, little knowledge in the sense knowledge ନାହିଁ total ସେଇ topic. A little ଆଉ little ଭିତରେ difference है. So little knowledge ମାନେ knowledge ନାହିଁ ସେ topic ଉପରେ basis, so we are going to start a new kind of research. So exploratory research, that means can you tell me in which areas can we do exploratory research? भाभी कि मत कहि परियो को टाइप रो जागा रे हम exploratory research कर परियो. Sir, existing literature रे करि परिबो. Existing literature रे ही करिबुनी. Existing literature रे केमति करबे? existing अछि बरा. Existing literature अछि माने भाबो ता माने ऑलरेडी ता ऊपर रिसर्च ही ताले हम नुवा जिंस कोन एक्सप्लोर करी. जहां ऊपर existing literature ही नाही तो ऊपर ऑपोजिट टा करतला. जहां ऊपर टोटली existing literature वाली किछ नै. एबे तो कहै सर existing literature कोत रे नाही. एबे भाबो पूरा completely नुवा नुवा जिंस जहां. Now think about it. Let's say cryptocurrency or NFT or let's say कि for example नुवा नुवा जिंस कोन आछि जहां पे हम रिसर्च करैसे नाही. AI very good. एबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो सोसाइटी ऊपर इंपैक्ट कोन? सोसाइटी कहले बहुत सारा या भीतर डायमेंशंस भी आसी दियो. एबे जणा कहै कि एल्डर्स मान को ऊपर इंपैक्ट कोन? यूथ मान को ऊपर इंपैक्ट कोन? है ना? जेंडर डायनामिक्स ऊपर इंपैक्ट कोन? सेमितिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इंपैक्ट कोन? केते स्टडी ही परि भाबो. एबे या ऊपर तुम कोन लागुची पुराना सोशियोलॉजिस्ट माने किछि रिसर्च करथिबे. समान कहले तो एआई ही नथिला. दरखाम जानिथिले कि कोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोन? तो एबे तुम माने जाई कि नुवा नुवा सोशियोलॉजिस्ट जो रिसर्च करियो that would be exploratory research because there will be no existing literature in it. You are going to be the first one. So exploratory research explores new areas which generate useful information. So and useful information generate kala kon hobo? It will fill the gap in our existing knowledge base. Means our knowledge base ku नुवा नुवा जिंस जि. Now from this can you tell me एबे गोटा करोलरी भाबो यार कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो डेटा डा बाहर छी इज इट अ प्राइमरी डेटा और इज इट अ सेकेंडरी डेटा? Sir, primary. Primary. Very good, excellent. So basically you are generating primary data, and remember generating primary data is always the most difficult job in social research. Okay, the most difficult काहे की because secondary data को तो तुम एनालिसिस करी कुछ भी कर परियो. Primary data करिया पे हमको कौन करिया पड़े? You have to go to the field, so it requires field work, and this is most difficult because it is time, cost, and labor intensive. तकलीफ. Okay. So exploratory research generates primary data, which fills up our gaps in the existing knowledge base. है ना? So यार examples कौन ही परियो? I have given a few examples. You have to be much better examples you can write. Technological new phenomena in technological addiction और तारो impact कौन होची society पे, है ना? We had also given an example of artificial intelligence, its impacts on society. You can write this also. Similarly, student unrest. Suppose student unrest ऊपर बेसिक research आगरू ही नहीं. So, okay, you can start a new research, exploratory research to understand why student unrest happens. So I have given you two more case studies. These are some case studies. What is the first photo? Can anyone tell me? कौन बुझियोटा देखिए. Sigmund Freud's psychoanalysis at that time was a novel method. तांकर केही precursor सेमितिया नथिले. So he was the first person to actually give so many new ideas.
So it can also be seen as exploratory research. Okay? Because सी जो कथा कहले जो sexual and aggressive motives that is determining our behaviors. That is new, a totally new concept. Human unconscious to study kariba. Okay. So all of these methods, they were completely new. Another recent news article I was seeing recently, and this reminded me ki, okay, this can also be an exploratory research. Now hella kon ki, see the headline. ହେଇଛି କଣ କି ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ଇଲନ ମସ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସଏକ୍ସ ସେଥିରେ ନେଇକି ଯୋଉ କଣ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ନାମ ଭୁଲିଗଲି Starlink, sir. Starlink, right? Starlink internet through re he is providing free internet access for free to people across the globe. तो he thought कि कौन की ना आगु आमे टावर फावर लगेकी दउथि तते लिमिटेड तार एरिया लिमिटेड थिला आमे एबे कोन करू बहुत सारा सैटेलाइट लगेकी पूरा वर्ल्ड सारा लोकन को कम्युनिकेशन दे देले द वर्ल्ड विल इंप्रूव है ना बेसिक सब सर्विसेज सब लोकन को मिलियो हल्ला कौन की Amazon रो गोटे ट्राइब भाबो ब्राजील रो से गोटे रेन फॉरेस्ट होतरे दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी फॉर मे बी थाउजेंड्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एबे समान को पाखरे इंटरनेट पहुंची गला तो इंटरनेट पहुंचलारू आमे Elon Musk was expecting कि they will use it for some good use, but they got immediately addicted to pornography. Now, can you do some social research on this or not? Now, when you are doing social research on it, what were the intended consequences of internet access to a tribal population, okay, isolated population, and what was the actual outcome? What was the impact of that decision on the tribal villages? Anchor social dynamics will change. So when you do this kind of research, this can also be a part of exploratory research because या ऊपर एपर्यंत किछि हेई नै एई जस्ट 5-6 तळ दिनर कथा एबे पिलाने टिके प्रॉब्लम तमन कोन होजी आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द आंसर्स दैट यू आर राइटिंग मु जानछि एबे से सेम एग्जांपल को तमने त आंसर लिखे ट्राई करियो exploratory research question would have been asked you write about exploratory research short note तुम स्टार्टिंग रे डिस्क्राइब कर दो तापर एमदे शॉर्ट रे लिख दो एग्जांपल Elon Musk Starlink or Elon Musk internet एबे एमितिया एते शॉर्ट रे लिखले भी एग्जामिनर बुझ परियन तो कहयो कोन चाहू so when you are writing examples slightly explain it a bit कि एटा हेइतला तो या पर रिसर्च चले सेटा हेइ पारि and also you should also always prefer sociological जते sociological example हेइ परियो first you have to prefer जल्दी sociological example देई पारु ना हो तापरे normal general studies रो उठेगी example you can write current affairs रो एटा current affairs रो example देई पारि but first you should give importance to sociological example. For example, here you can write about technological addiction, so student unrest, and don't write in very short. Don't write like this. ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ keywords use ହବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ explain କରିବା ଦରକାର. For example, let's say कि you are discussing about what is the how cultural values get transmitted. How cultural values get transmitted. So when you are writing about this, if you are writing like this example, social remittance. Now this is a technical term. Now this will be understood by the examiner because this is a well-known term. So examiner knows what this means. एबे एठी तुम example रे लिखि दबो Elon Musk internet or Amazon drive pornography. से बुझी परियन नो कोन कहय एग्जाम. So don't write like this in actual answer sheet. When I was seeing some of your answers, some people have simply written example very, in example they have written just 1-2 words. Don't write like this. Explain in a bit. बुझियाला exploratory research कौन? Yes, sir. Okay. Next है empirical research. Empirical research कौन? This is basically very closely related to experimental research. Empirical research माने होची based on empirical evidence. So empirical evidence कोडो आसियो. That means ଗୋଟେ scientific method. तो जो थरे हमें experiment करके ही evidence किछ पाई थी. So that is empirical research. Now what is the exact difference between empirical research and experimental research? Experimental research में हमें कौन करचु IV को manipulate करके DV को check करचु EV को control करचु. So we have scope to control the variables. Empirical research रे कौन हमको एते सारा यात्रा करिया दरकार नहीं. We already have some existing empirical evidence. Means हम पाखरे data already अछि. So based on data you are building your theory or you are drawing some conclusion.
So that means it can be a secondary data also. So it is not necessary that it should always be primary data. Empirical research on secondary data means अन्य research अन्य मानकर experimental research है साथियों सेथुरु हमें data उठेगी you can do empirical research. So here you are not worried about any theory or system because you yourself are building some conclusion. So you are only taking up the data. For example, मैं तुमको एक example दूँगी कि ଗୋଟେ sales record केते अछि तो तार basis रे you are drawing some conclusion. Sociology रे कौन सेमती आबो let's give you sociological examples. Okay, generic example देले तुम answer रे भी से generic example लिखि दोछ. So sociology रे कौन हबो, let's say for example you have taken data from different types of suicide in different areas. Okay? So suicide rates in different areas and based on this data एगुडा होचे सब data points गुडा. So you see this, you draw a pattern. Let's say कि ए एरिया रे बेसी सुसाइड होची, ए एरिया रे कम कम जाईची. ओके, ए एरिया रे ए टाइप रो सुसाइड होची. लेट्स से कि यूथ सुसाइड बेसी होची. सो यार अभी पैटर्न अछि कि नहीं. So finally when you draw a pattern that can be an empirical research. Let's say for example कोटा, राजस्थान नो कोटा. कोटा रे जो टाइप रो सुसाइड होची it is very different from the suicide which is happening in let's say तेलंगाना रो रायलसीमा एरिया रे, है ना. What is the difference, can anyone tell me? एठी भी सुसाइड होची, एठी भी सुसाइड होची. What is the difference? These are the students. कोटा रे जो राजस्थान नो कोटा रे सुसाइड होची, these are the bright students जो वन को कोचिंग इंडस्ट्री रे पठाई. से माने एकेडमिक प्रेशर रे घर लोगों को प्रेशर रे आसी की सुसाइड करछन. रायलसीमा रे फार्मर्स आर सुसाइड कमिटिंग सुसाइड, है ना, because this is a riot, sorry, this is a famine area, ड्राई लैंड. तो आमे देखिया कि ए टाइप रो सुसाइड एज ग्रुप केते और ए टाइप रो सुसाइड रो एज ग्रुप केते. So these are only data, but based on the data you are analyzing and making some kind of generalization, that is empirical research. बुझी बुझी कौन पूछ. Yes, Okay. sir. Any doubts so far? Descriptive research, exploratory research, किसी डाउट होची empirical research? No? ठीक है. Yes. Oh, that's very good. You know, if you always keep on saying no doubt, no doubt, I'm having a doubt. जदि पिलांगर totally किसी doubt नहीं, either of the two things can happen. Either I'm a genius that I'm explaining everything completely to you, or you are genius, you understand everything. So you tell me which is correct. You are the genius or I am genius. What do you think is the answer? I Both think you guys. Okay, typical, you know, administrative answer कि हमको सब जिनिस को बैलेंस करियर अछि. ठीक है. So let's move on to the next part, experimental research. Experimental research, I have already explained the basic part to you. So we are not going to take a lot of time on the basic framework, but experimental research रे भी दुईटा different type of experiments अछि, so we are going to go into detail about that. So experimental research नाम रू ही जଣା पड़छि कि it is based on some kind of experiment. तो से experiment रो purpose कोन? Experiment रो purpose हला to establish causal relationship among the variables under study. We have discussed this in detail. Variables here means IV, DV. Independent variable, out dependent variable. Independent variable को हमको change करके manipulate करके you have to show कि it is how it is changing the dependent variable. Now can you tell me एथरो मते गोटे जिंस doubt होची. Suppose you have identified a few independent variables IV1, IV2, IV3. Okay. आउ तारो corresponding dependent variable अछि. एबे प्रथमे आमे कोन कलु IV2, IV3 को constant रखी कि IV1 को change कलु. देखिली कि dependent variable change हो नाही. तापर आमे कोन कलु IV2 को change कलु, अदर दुटा independent variable को fix रखी कि किंतु तथापि DV change हला नहीं. पुणी IV3 को change कलु, अन्य दुटा independent variable को fix रखी कि तथापि DV change हो नाही. तो एथरो हमहु कोन जानिया को मिली पारे? What do you think? ता माने कोन है?
भाव टी भाव भाव गेस करो कौन थी आई विल गिव यू हिंट एबे भाबो इफेक्ट फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल हला एकेडमिक परफॉर्मेंस आमे जानिया को चाहू कि एकेडमिक परफॉर्मेंस रो कॉजल फैक्टर्स कौन if you identified three such independent variables to study their effect on academic performance and first हला कि vehicle driving skills second हला swimming skill third हला public speaking skill and each आमे देखलु कि यारो किछि भी डिभी संगे चेंज हो नै ता माने कोन ता माने सिंपली तुमे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रॉन्ग चूज करिचो you have not correctly identified the independent variables that means yaro independent variable is something else for example comprehension skills है ना memorization ability okay logical reasoning ability to do logical reasoning ए सब को मैनिपुलेट कले तो हमें देख चेंज देखि थांदु एकेडमिक परफॉर्मेंस रे एबे तुमे रैंडम जिंस को चेंज करी देखिले डिवी आसन ता माने कोन हमरो जहा चूज करछो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन चूज करछो बुझियो जे कोन कहूची तो इटा ता माने I सेया ही हला ना कि एबे एथिरे कोन एथिरे कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हे परिबो नाही कॉजल रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड हियर बिकॉज़ तुमे किछि भी आईवी चूज करले डीवी चेंज हो नाही बट हियर यू कैन एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिकॉज़ एठी तुमे जहा चेंज करियो एटा चेंज हो मेमोराइजेशन चेंज कलो दिस इज आल्सो चेंज दिस इज इफ यू चेंज दिस इज आल्सो चेंजिंग माने कोन ए केस रे ऑल थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल माने ए जो डिपेंडेंट वेरिएबल एटा गोटे फैक्टर पई नो ए तीनटा एक फैक्टर पई हिस बेले बेले हे पारे तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नो तापि गोटे दुटा ए दुटा लेट्स से फैक्टर ही काम करछि आउ ई फैक्टर उडा काम करनी हम जानियो केमति काम करनी बिकॉज़ याको एते मैनिपुलेट करिवु चेंज होबो नै डीवी याको एते मैनिपुलेट करिवु डीवी चेंज होबो नै याको मैनिपुलेट करिवु डीवी चेंज होबो नै किंतु याको एते हम चेंज करिवु 1 एंड 2 डीवी चेंज हिजिवो तो हमें सेतु जानिबो कि then you are able to establish cause and effect relationship you say कि now this factor 1 and factor 2 these are the causes and this is the effect right so this is the theory now एथिरे प्रॉब्लम गोटे ही हुए extraneous variable or control variables extraneous variable or control variables try to understand I had explained by the way I had explained this part also just to give you some more idea extraneous variable होला say variable जोटा बेसिकली हमें कहि परिया unwanted factors or noise ओके जोटा कि हमरो आईवी डीवी विथ रिलेशनशिप मझरे कवर में हटी हो तो ताको हमको इधर एलिमिनेट करियार अछि और ताको कंट्रोल करियार अछि कंट्रोल इंडिया फॉर एग्जांपल टू होल्ड कांस्टेंट एटा करले ही हमें आईवी डीवी विथ रिलेशनशिप जान परिया तो यार मतलब हला एक्सटर्नस वेरिएबल हला से अनवांटेड फैक्टर्स जहा को कंट्रोल न कले हमें आईवी डीवी विथ रिलेशनशिप कोन जान करिया ना फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तमे जानिया को चाहू छ कि व्हाट इज द लेट्स से कि let's say if you uh, if you read out different portions of books how easily can people understand so this is the independent variable this is the dependent variable so हमें देखो जो कि different portion of book केते easily understood हो so हमें we have identified different portions different areas कि एटा इजीली बुझी होची और ए पार्ट ता लेट्स से ए बी सी को पार्ट ता इजीली बुझी होची बर्तन कोन हबो ए मझरे जदी बुझेला समय रे नॉइज आस्तो बैकग्राउंड नॉइज हेई पारे कि हमें जो सब्जेक्ट को नेकी एक्सपेरिमेंट करतु से माने नॉइज नै सुनि परिबे नै हमें कोन कहूछु सेट पई कहे कि ए एक्चुअली इजी ही थई पारे
बट साने नॉइज से टाइम ही गला तो साने बुझी पारलेन साने कहले नहीं आज्ञा एटा तो कोन हम बुझी पारलेन तुमको लागला अच्छा था माने एटा होची बहुत डिफिकल्ट ठीक अछि यू नोटेड डाउन कि एटा बहुत डिफिकल्ट तापरे बी को एक्सप्लेन कलो बी टा हेई पारे कि मॉडरेटली डिफिकल्ट थिला बट साने क्लियरली ताको सुनी पारले बिकॉज़ सेई टाइम रे नॉइज नथिला तो साने कहे हां आज्ञा हम बुझियो तो तुम कहे अच्छा था माने बी टा होची बहुत इजी माने कोन फाइनली तुम जहां कंक्लूजन ड्रॉ करिवो से कंक्लूजन टा रॉन्ग थी तो ये रॉन्ग जिनसटा केतेले आसला एटा गोटे एक्सटर्नल वेरिएबल भाई आसला नॉट बिकॉज़ ऑफ आईवी एंड डीबी सो आवर जॉब इज टू इधर एलिमिनेट इट तो जदि पारिया कोन करिया नॉइज को पूरा एलिमिनेट माने पूरा नील कर दवा पिन ड्रॉप साइलेंस जोठी थिबो और जदि हमें एलिमिनेट न करि पारिया ताहाले हमें एटलीस्ट कांस्टेंट करिया माने ए टाइम रे ए पर्सन टा पढेला बेले भी जते नॉइज थिबो बी पढेला बेले भी सेतिकी ही नॉइज थिबो सी पढेला बेले ही सेतिकी ही नॉइज थिबो ता माने लोक माने कष्ट जेमति हो कस्टमर से सुनी कि भी they will try to understand on the basis of the actual content of the book not due to whether they can listen to that part okay so that means कि external variable टा को हमको सबले eliminate हम करियो चाहू और जदी eliminate न होई करला ताकू constant रखि कि अन्य independent variable को manipulate करियो चाहू so it is that is why I have written it is held constant or eliminated. So the purpose of this type of research is what? For definite and accurate explanation. X causes Y. Eta hele hi causal relationship CER establish kariye. Now these are some theoretical part that you can write in your answer. That experiment mane kon? Experiment is nothing but controlled observation. Control mane kon? Na IV independent variable ko hame manipulate kari pariya. So these are the causes or causal factors. जेमती आईवी को आमे मैनिपुलेट करि पारिया और चेंज करि पारथुआ एक्सटर्नल वेरिएबल्स को और नॉइज को आमे एमती एलिमिनेट और कांस्टेंट रख पारथुआ एंड एक्यूरेटली डिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट को मेजर और ऑब्जर्व और मेजर कर पारथुआ सो एई तीनटा वे रे ही कंट्रोल हमर आस्पेरियो जेतले एई तीनटा कंट्रोल आनि दबो सेतले हमर रिसर्च टा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही जियो जेतले एई फैक्टर उडा कंट्रोल ले हमर नाही सेतले रिसर्च ही परियो नाही माने सॉरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही परियो नाही. So it can be some other kind of research. It can be descriptive research, analytical research, all of those things. But it cannot be experimental research. Experiment mane control of crucial variables. बुझी होची theoretical part टा बुझी होची माने कौन experiment माने कौन बुझी ଆଜ୍ଞା होची बिलान ଆଜ୍ଞା sir. गुड नेक्स्ट हला दुई टाइप रो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अछि ब्रॉडली गोटे कुआ जाय लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट गोटे कुआ हुए फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड वर्क field experiment this term is used in other social sciences like psychology in sociology we use the term field work बाकी laboratory experiment that is same in both sociology and psychology so experimental research broadly दुई टाइप रो गोटे हला either देखो हमर मेन पर्पस होची वेरिएबल्स कंट्रोल करिया बर्तमान वेरिएबल को जदी हमें गोटे लैबोरेटरी भितर कंट्रोल करि पारलु ताले सेटा को कहया लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जदी वेरिएबल को हमें लैबोरेटरी रे कंट्रोल न करि हमें नेचुरली ऑकरिंग एरिया रे जोठी होची सेठी ही जाई के हमें कंट्रोल करि पारलु टू ए ग्रेट एक्सटेंट इफ यू आर एबल टू कंट्रोल then that becomes a field experiment right so experiment when done in the field experiment what are the laboratory setting रे artificial confine भितर हला then that is laboratory experiment तो यार दुईटा बेस्ट एग्जांपल है ना वी हैव ऑलरेडी read about this Milgram's experiment on obedience that is a laboratory experiment okay second experiment this I have not told you before Pygmalion in the classroom so I am going to explain this to you देखो laboratory experiment और field experiment भितर डिफरेंस कौन now listen to me very carefully दुईटा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च मेथड अछि सोशल साइंस रे दुईटा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च am I visible now Yes sir. okay so what are the those methods what happened unable to sure okay ठीक so laboratory experiment रो ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ एग्जांपल हैला जोटा ऑलरेडी हम ଗୋଟେ डिस्कस करथिलु Milgram study on obedience so you remember I had told you that experiment on giving shock to different people ମନେ Yes sir. ପଡୁଛି Yes sir. तार निष्कर्ष कौन थिला can you explain
कौन सिद्धांत से बाहर थिला से एक्सपेरिमेंट सर माने जो मानको एज ए सब्जेक्ट नि आइतले एक्चुअली तांको ऊपर ही रिसर्च होथिला तो एट द एंड जेते बेले तांको जेते हाई लास्ट एट द एंड तांको एमिति करा हला कि रिसर्चर माने जेते भी हाई वोल्टेज दबा को ट्राई करले से माने सेते हाई वोल्टेज दे माने दे चलले तांको निज ए सेटा तार कंक्लूजन कौन बाहरला एटा तो एक्सपेरिमेंट थिला कंक्लूजन कौन बाहरला कंक्लूजन एटा बाहरला हां को ट्राई इन्फ्लुएंस टू जो कौन बाहरला माने इन्फ्लुएंस रहउची गोटे मतलब अथॉरिटी फिगर माने होची से माने कहले कि आमे निजको जते इंडिपेंडेंट एंड जते फ्री विल अछि बोली भाबुछु सेतिकी भी नाही एंड लोक माने बहुत इजीली ओबे करंती गोटे अथॉरिटी फिगर ओबीडियंस करियारो माने इवन हद भी पार कर जांती जेतले से अथॉरिटी फिगर तांको एश्योरेंस दबो कि तांको एक्शन रो इंपैक्ट तांको ऊपर पड़िबो नाही एंड सेकंड कथा हला से अथॉरिटी फिगर शुड आल्सो say that okay what you are doing for some kind of some fixed purpose they were saying कि हम गोटे भलो रिसर्च करछु तो सेत में तुम कहउछ ता पय से माने को हद को भी जाई पारन सो ता माने कि people have a tendency to conform or obey so this was done in which kind of setting एटा तो जाई कि हमें मार्केट भितरे करना ए एक्सपेरिमेंट टा कोठी हेची गोटे लैबोरेटरी भितरे हेची सो दैट मींस लैबोरेटरी माने माने गोटे artificially created गोटे environment रे setting रे करा हेची so that becomes a laboratory experiment and the thing to notice here is laboratory experiment रे सब बेले हमरो variables ऊपर control बहुत अधिक रहे सब बेले the highest amount of control over the variables will remain in the laboratory experiment okay सेथि पई laboratory experiment रे भी हमकु causal relationship को establish करिया सबुठार easy हो किंतु problem होची this is a trade off between these two things गोटे हला कि केते बेटर वे रे तुमे कंट्रोल कर परछ वेरिएबल्स को एंड सेथि पई कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करि परछ बट द ट्रेड ऑफ इज कि जदी एटा करि पदला ता बदले कोन हबो तुमे जहां भी तुम्हारा निष्कर्ष बाहरियो ताकू जनरलाइजेशन करिया रे डिफिकल्टी तुमको हबो यू कैन नॉट से कि what has happened in the laboratory will also happen in the actual world so this problem is known as the problem of external validity दुई टाइप रो वैलिडिटी अछि इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी चलो एबे ता भितरे डिटेल ले जिबा नै द बेसिक जिंस अछि कि जते बेले भी किछोटे आर्टिफिशियल सेटिंग रे रिसर्च होबो सेते बेले आमे तार रिसर्च रो फाइंडिंग्स को जनरलाइज करिवा रे डिफिकल्टी हमको हबो बिकॉज़ जहां भी हमें एक्सपेरिमेंट करछु सेटा गोटे लैबोरेटरी भितरे करछु माने नाही कि से सेम जिंस रेप्लिकेट हेबो एक्चुअल वर्ल्ड रे एक्चुअल फील्ड रे सो आर्टिफिशियलिटी will reduce the external validity or artificiality will reduce the ability for us to generalize the outcome of that experiment. This is the problem of laboratory experiment. On the other hand, जदि गोटे रिसर्च कौन हो पूरा नेचुरलिस्टिक सेटिंग रे सब होई ओके सेथरे हमरो वेरिएबल्स ऊपर एते कंट्रोल नथिबो किंतु जेते नेचुरलिस्टिक सेटिंग रे हबो मींस नेचुरली जो जगह रे हबा कथा फेनोमेनन टा हबा कथा हम सेठी जाई के स्टडी करू then सेते हमें से फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को जनरलाइज कर परिया मींस हमें कहि परिया विथ अ ग्रेट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि एठी जेमती होउची हमें जहां निष्कर्ष हमें जहां पाइलु एई भले सिमिलर जगह रे भी सेई भले जिंस हबो बिकॉज़ हमें नेचुरल जगह रे से एक्सपेरिमेंट कर सॉरी से रिसर्च करिया ऊपर now the second such kind now there is a compromise between these two the compromise between these two कि at one hand there is laboratory experiment at the other hand there is field जो थरे जाई कि तमे मे भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप रो करथो गोटे मझी मझिया मेथड अछि दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट हमें एक्सपेरिमेंट भी करिया मींस हमें वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करिया प्लस हमें फील्ड जाई करिया सो दैट वी कैन आल्सो से टू सम एक्सटेंट कि वी कैन जनरलाइज द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च तो फील्ड एक्सपेरिमेंट रो एग्जांपल बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ टीचर्स एक्सपेक्टेशंस ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एबे ध्यान से सुनो यार माने कौन गोटे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बहुत ही फेमस स्टडी हिता रोजेनथल एंड जैकबसन बोली कोइ सोशल रिसर्चर्स साइकोलॉजी रे भी पढ़ा हुए इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी रोजेनथल एंड जैकबसन माने कौन कले
एमाने जाइकी कौन कले गोटे क्लासरूम रे जाइकी रैंडमली, दिस इज द पॉइंट, सेमाने निजे भी जान नथिले को पिला भलो पढुची को पिला खराब पढुची, जस्ट आखि बुझी चूज आउट कले पांच छटा पिला, तापर तांको टीचर मानू डाकी गोटे कॉर्नर रे कहले सुनो तुम जानि जे ए जो चारि पांचटा पिला अछन ना हमको लागु जे पिला माने बहुत इंटेलिजेंट अछन हला, बस एती कहि कि सान पळे सीसीटीवी कैमरा हमरा लगे देले सेमाने सब रिकॉर्ड कले कि टीचर माने तापर कोन करछ। तो टीचर मान को कहला कि ए माने टिके ब्रिलियंट पिला और टीचर मान लागले कि पिला माने टिके डिफरेंट अन्य पिला, तो टीचर माने मन नावले से माने कोन डिफरेंट, अच्छा देखिया कोन माने को समान टीचर माने कोन कले तांको बेसी क्वेश्चन करिया स्टार्ट कले से पिला जस्ट टू सी कि मान को भीतर एमिति कोन अछि। तो जेतल तांको बेसी क्वेश्चन कले बेसी अटेंशन देले पिला मान को सेही पिला मान को लागिला कि आमो भीतर किछि अछि कि टीचर माने आमो ऊपर एते इंपोर्टेंस काहे दोछन, तो सेमाने एक्साइटेड हे गेल, सेमाने तो एक्साइटेड हे गेले सेमाने सब दिन क्लास को प्रिपेयर हे के आसे, तबे सेमाने क्लास को प्रिपेयर हे के आसले टीचर को संगे रेगुलर इंटरेक्ट करछंती पढारे ताकर मन लागि गेला, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आसी गेला, तार डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ला ताकर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो पिला आगरु बहुत कम मार्क रखुथिले सेमाने सडनली बहुत हाई मार्क रखले, एंड ईच ऑफ दोस चोजन स्टूडेंट्स दे परफॉर्म मच बेटर देन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, एंड जो पिला चूज करा हे नथला सेमाने ताकर पूर्ववत आगरु जेमिता स्कोर करथले सेही बेले स्कोर कर। तो रिसर्चर माने आसी परे टीचर मान कहले आमे आपन को जो कहथिल पिला मान को पाखरे किछ टैलेंट अछि किछ स्पेशल टैलेंट नथला, the only thing that happened was that you started believing in them, you started expecting more out of them, and that made them expect more from themselves, and that made them work more and more. I will tell you a very funny thing. Class re, by the way, I don't know how far we should give personal examples, but I'll describe you very shortly. I was never a very talented student. Okay, I was a very normal kind of student. My maybe good fortune is that my parents believed in me a lot. ମୁଁ ସାନବେଳେ ଟୋଟାଲି ମତେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନଥିଲା, but they started encouraging me, yes ମିଛରେ ବି, yes sir you are very smart, you know you are going to do very well, and then I was also fortunate to have some teachers who maybe saw some kind of spark in it me, or maybe there was no spark, but they started telling me ki ha you have some talent, you see more literature interest like English literature, so I started reading English books more and more, and जते मैं पढ़िली मोर टीचर आवरी खुशी हे गेले आवरी इंप्रेस हे गेले वा सर बहुत पाठ पढ़ी, then I started to read more and more just to impress others, and when this practice became a habit then I started enjoying reading on myself, then later on this thing I internalized and I started and पाठ पढ़िया मोर गोटे हॉबी टाइप रही गला। So what started out something which was not completely true or not at all true, because I internalized it, it became true for me. So this is a lesson for each and every one of you. What you choose to believe in, you can become. Okay. Rosenthal and Jacobson have shown this, right? And this experiment was known as Pygmalion in the classroom. Okay. And this effect is also known as Pygmalion effect. बुझियाला Pygmalion effect कौन? Yes, sir. So this is an example of Pygmalion in the effect, or this experiment is an example of field experiment or field work. Now next type of research is evaluative research. Evaluative research रो माने कौन? Evaluation. जो research रो main purpose है evaluation करना। कहाँ रो evaluation करिया? गोटे program और नुआ initiative किसी भी सेटा केते इफेक्टिव और केते एफिशिएंट। इफेक्टिव माने से इंटेंडेड कामटा को केते करि पारुछ, एंड एफिशिएंसी माने केते माने कम एफर्ट रे केते बेटर करि पारुछ। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर डिस्कसिंग अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स, वर्तमान आमे डिस्कस करिवु कि वेलफेयर स्कीम सतरे काम करछि कि नाही। लेट्स से एनआरजीएस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो याकू आनिवार किछि बहुत सारा पर्पस थिला गवर्नमेंट रो। वन ऑफ द पर्पस वाज टू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ रूरल पॉवर्टी। आ गोटे पर्पस थिला डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन को भी रिड्यूस करिया। डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन माने कोन? रूरल रु अर्बन एरिया को पुश फैक्टर्स पई जिबा। पुश फैक्टर्स माने रूरल एरिया रे किछि खराब जिंस अछि बोली ताको अवॉइड करिया पई अर्बन एरिया को जाउछि, नॉट बिकॉज़ ऑफ पुल फैक्टर्स ऑफ अर्बन एरियाज बट पुश फैक्टर्स। सो दिस इज डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन।
माने रूरल एरिया रे लेट्स से जॉब नहीं, ओके, किसी बेसिक एमिनिटीज नहीं, तो ता पे बाध्य है कि तुम छाड़ी कि जदी जाउ तो अर्बन एरिया को, दैट इज डिस्ट्रेस माइग्रेशन। नाउ एनआरजीएस रो ए सब पर्पस थिला, एबे हमें प्रोग्राम तो इंट्रोड्यूस कर देलु गवर्नमेंट हिसाब रे। इवैल्यूएटिव रिसर्च कौन करियो, से प्रोग्राम टाको इवैल्यूएट करियो कि हाउ फार दैट इंटरवेंशन और दैट स्टेप was able to achieve its stated objective, that is known as evaluative research। बुझी होची कौन कौन? देखो जो पार्ट तुम्हारा सिलेबस रे मेंशन नहीं सेटा को मु बेसी डेप्थ रे जाउ नहीं, आई एम जस्ट गिवन इन वेरी ब्रीफ नोट्स। दिस इज, यू कैन कंसीडर दिस एज एडिशनल मटेरियल, ओके। एटा तुम्हें रिसर्च इन जनरल जतरा आंसर लिखियो सेटा मेंशन करिया। Am I going too fast? No, sir. No, sir. ठीक अछि, पेस ठीक अछि, ओके, पेस ठीक अछि तो Yes, sir. okay। Next is basic research। Basic research is also known as pure and fundamental research। I told you this। So यार purpose कौन ना, हमारे universal laws or basic principles or fundamental rules what a subject matter ऊपर ताको discover करियो। So this is also important for generating theories। Basic research का काम हला नुआ नुआ theory को develop करियो and नुआ नुआ basic principle rule को develop करियो। So here you are not worried about the application part, you are only worried about to generate theories, you only want to understand the subject matter, right? So knowledge for its own sake, knowledge for the sake of knowledge, not to use it for some practical purpose। तो यार example कौन होगा? I have given an example of trying to understand कि criminality, for example social factors of criminality, माने गोटे लोक को social factor ପାଇଁ criminal ही जाए, that can be a basic research। So initially you are only trying to understand कि criminals केमितिया हो को factor ପାଇଁ हो। Applied research कौन हो? Applied research हो जेतले हम pure research को apply करिवु किछि गोटे practical purpose। So when you apply theories, principles, laws to some practical use or solve any particular problem, that is known as applied research। तो ए same example में criminals काहे की होंती, that is these are the causal factors। now you understood, okay, ए सब reason ପାଇଁ criminal होंती। now you use that knowledge to rehabilitate criminals or to prevent the growth of crime in the society। So when we use the insights or knowledge gained from other kind of research to solve some practical particular problem, then it is known as applied research। Similarly, next is quantitative research and qualitative research। Quantitative research माने कौन? It comes from the term quantity। Quantity माने कौन? किसी भी characteristic or property, social phenomena, human behavior ताको जदि हमें quantify कर परिया, then research based on that quantification will be a quantitative research। So quantification केमितिया हबो? जेतले हमें scientific methods use करी। Scientific methods कौन? Research design सेमितिया हबो। It is सब type of research design आसीबनी। For example, experimental research can happen here, for example। So in these kind of research you can quantify any phenomena and then you are going to study। सेमितिया sampling, scaling, okay। Next chapter रे हमें sampling and scaling there is specifically mentioned, we will study in detail। So basically these are objectification of different phenomena, right? Data collection and measurement रे हमें objectively हमें data कर परिया, data को collect and analyze कर परिया। So सेटा basis रे जो research होगा that will be quantitative research। So obviously positivists will always prefer this kind of method, right? Quantitative research को साने obviously prefer करिए because objectively study कर परिए हमारे social fact को ता द्वारा। तो quantitative research रो opposite और opposite कहा ठीक होगा नहीं, other end रे जोटा अछि that is qualitative research। Qualitative research माने quality which is not amenable to quantification, objective assessment or measurement। means किछि जिंस जोटा को हमें quantify करि परिबु नाही और करिया को चाहू ही नाही, सेटा को qualitative research कहै। तो यार बहुत ही बड़ा एग्जांपल होची प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। बहुत सारा पर्सनालिटी टेस्ट अछि, देखो किछि पर्सनालिटी टेस्ट अछि जोटा पर्सनालिटी को क्वांटिफाई कर दियन,
आउ किसी पर्सनालिटी टेस्ट अछि जोटा क्वांटिफाई करते नाही. These are the qualitative tests. So Rorschach test or Rorschach blot test is one such test in which there is qualitative analysis of the subject matter, which is here personality. तुम यही वाला स्लाइड किसी देखी जो मूवी और किसी भी वीडियो यूट्यूब वीडियो रे यू नो अबाउट Rorschach test देखी ना No, प्रिया? sir. No. Okay. So this reminds me, if you want, you can also watch a movie called Watchmen. Zack Snyder directed movie. There is a character called Rorschach. He also wears a mask like this. Okay. So that reference comes from this personality test. Basically, हुए कौन? I'm explaining to you very briefly. देखो गोटे लोकर को टाइप रो पर्सनालिटी अछि आम जानिबार डिफरेंट मेथड अछि. गोटे मेथड हला कि एटा हमर एई अजम्पशन ऊपर बेस हेछि कि आमे तले लोकन को ना गोटे डेफिनाइट पिक्चर देखिबू. लेट्स से गोटे पहाड़ देखिबू. तो एटा तो समस्त कहबे, आम समस्त को पचारिबू, समस्त कहबे हां एटा पहाड़ अछि, सूर्य अछि. तो सेथिरे कोन सेई लोकंकर माइंड भितर कोन चलछि हम जानि परिबू नाही. बिकॉज ए जो जहां भी जिंस हम तांको देखैलु सेटा बहुत ही फिक्स्ड और बहुत ही कंक्रीट जिंस. जेतले आमे तांको गोटे एब्स्ट्रैक्ट जिंस देखैबू तापर तांको पचारिबू कि तुम कहो कि यार माने कोन. तो सेमाने जहा जहा सेतिरे गप कहिबे सेथिरु आमे तांकर माइंड भितर एक्चुअली कोन अछि जानि परिबा. मन देखो केते माने चालाकरी जिंसटा कराय. एक्चुअली इंक्लूडर माने किछि नहीं. दे आर जस्ट रैंडम ambiguous stimulus. ambiguous माने को वे रे भी इंटरप्रेट करा जी परियो. किंतु से सेम स्टिमुलस को हमें देखि यदि डिफरेंट लोगों को पचारियो बाबू देखो तुम एथरे तुम कोन देखा जाउची. जदि गोटे क्रिमिनल ए फोटो को देखियो से क्रिमिनल कहयो कि मते लागुची एटा गोटे गोटे बैड टाइप रो देखा होची. तापर कहबो हां को तापर स्टोरी गोटे को कि कोन लागुची कोन हेतियो ना मते गोटे लागुची बैड टा बहुत गोटे वायलेंट बैड टा. से बैड टा बोधे लोगों को जाई कामुड़ी दे आ मते से बैड टा को बाड़िया को इच्छा होची. तो तामाने देखो एक्चुअली जिंसटा गोटे मिरर भलिया काम करछ. ए फोटो रे किछि नाही कि फोटो को देखि कि लोक माने जहा तांकर मनर भितर अछि कहिबे ता द्वारा हम तांकर पर्सनालिटी बुझि पारि. ऑन द अदर हैंड गोटे नॉर्मल लोक यदि याको देखियो नॉर्मल लोक कहयो कि मते एटा गोटे बटरफ्लाई वाला देखा होछ. बटर तापर कहै जे कोन तुमको लागुची ना इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ब्लैक एंड व्हाइट हिची बहुत सुंदर लागुची. So that means से लोक मनरे वायलेंस नाही. So this is a projective test. Now can we quantify this? How can you quantify this? गोटे लोक केते क्रिमिनल तार ए आंसर रो हम केमिते कहि पारि कि नाही लोकडा एते परसेंटेज क्रिमिनल और गोटे लोक केते भलो सेटा तार बटरफ्लाई वाला आंसर रो हम केते केमिते क्वांटिफाई कर परिया कि नाही ये होची 30% भलो. So that means कि these are tests or these are types of research which cannot be quantified. So these are what? These are qualitative research. Okay. बुझी होची कोन कहूची? Okay. The next type of research is known as action research and participatory action research. Action research कौन? Action research होची anything that you have to which is applied in the social science. Means problem होची कौन कि suppose try to understand what is action research. किछि research आमे सेतिपे कंडक्ट करूछु कि हमरो सोसाइटी रो immediate societal problems को solve करिया पे. लेट्स से आमे जो कम्युनिटी रे रहउछु, ओके, लेट्स से आम कम्युनिटी रे क्राइम बहुत अधिका अछि. हे पारे आ गोटे कम्युनिटी रे आ किछि प्रॉब्लम थियो. सेथिरे प्रॉब्लम कोन आ गोटे कम्युनिटी रे प्रॉब्लम थियो कि सेथिरे होचंती फीमेल माने बहुत बेसी डोमिनेट कर दउछु. फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड ता द्वारा मेल माने इनसिक्योर फील करछु. जहां भी सोसाइटल प्रॉब्लम अछि ताकू सॉल्व करिया पे जो रिसर्च आमे करू. तो आमे कोन करियो ए पर्टिकुलर जगह रे हम स्टडी करियो कि फीमेल डोमिनेटेड काहे कि अछि. केमितिया तांकर डोमिनेशन को काउंटर करा जी परियो. केमितिया मेल मानको माइंड रे भी आमे सेल्फ कॉन्फिडेंस आनी परियो. तो सपोज रिसर्च फल रे हमरो इंडियन निष्कर्ष किछि बाहरला कि ए रीजन पे फीमेल डोमिनेटेड अछि एवं ए काम कले आमे मेल मानकर भी कॉन्फिडेंस आनी परियो. देन वी विल इमीडिएटली इंप्लीमेंट द outcomes of the research findings. So this is what this is action research means. गोटे action नवा पई हमें research करू. सेमितिया ए सोसाइटी रे कोन क्राइम बहुत अधिका अछि. सो ए सोसाइटी रे एक्सपेरिमेंट हबो और सॉरी रिसर्च हबो
कि क्राइम कहीं तांकर हाई अछि एवं तार कोन सॉल्यूशन ही पाए व्हेन वी फाइंड आउट द कॉजेस लेट्स से हमें जानलु कि आम नेबरहुड रे क्राइम एथै अधिक अछि बिकॉज़ आम नेबरहुड रे बेसी लोक अनएम्प्लॉयड अछि ताले हमें कोन करियो इमीडिएटली तार सॉल्यूशन बाहर करियो हमें यूथ माननकु केमितिया किछि गोटे जॉब रे एंगेज करियो ट्राई करियो सो any research which is undertaken to solve any immediate societal problems and the outcome of which we implement in a practical manner that is known as action research and action research ro participant जेतले से लोकल लोक हे जानती से लोकल लोकन को नेकी हमें रिसर्च करू participants then that is known as participatory action research or PAR. So when the people themselves become part of the research that becomes participatory action research. तो एटा गोटे बहुत ही बढ़िया जिनस तुमे आंसर राइटिंग रे सबले मेंशन कर परिबो एग्जांपल में फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च सोशल प्रॉब्लम रे तुम जहां भी लिखाइ छै कि गोटे सोशल प्रॉब्लम को हमें केमिति काउंटर करी तो लिखो कि certain type of research can be undertaken to find the exact causes and the outcome can be implemented to find solutions for example participatory action research underline कर दो ये you get good marks बुझियो छी Yes. any No. doubt so far Sir, applied research और ताले participatory action research रो कौन difference रहेगा? very good देखो applied research pro scope कौन हला ना बहुत ही wide the difference is in the scope applied research कौन जे कौन से research ऊपर हमें research करिवु तार practical problem ऊपर तो practical problem is not immediate societal problem हे पारे practical problem let's say practical problem हमर कौन अछि जेमति कि हम कहबो सोसाइटी नो इन जनरल इंडिया रे practical problem अछि poverty अछि ना unemployment अछि youth मानकर let's say drug abuse among youth अछि ये सब applied research रे यूज होना ही कम होला participatory action research और AR हैला कोन से सेम जिंस बट poverty in our community आम कम्युनिटी रे poverty अछि हम कोन करी हे पारे इंडिया सर रे तने unemployment in our community drug abuse among our groups for example आम ग्रुप होचन ट्रक ड्राइवर तो सेमानन को हमें केमितिया तारो किन सॉल्यूशन बाहर कर सेकंड कथा हला एटा हला AR इन जनरल AR पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च आउ गोटे जिंस एडिशनल जिंस ऐड हेतियो एथिरे कोन एठिकार लोक माने ही पार्टिसिपेट करिवे अप्लाइड रिसर्च रे कोन हमें सपोज रिसर्च चाहि ओडिसा रो किछि सैंपल सर्वे नै कि हिची आंध्र प्रदेश रो किछि लोकन को नै कि हिची ओके जम्मू कश्मीर रो किछि लोकन को नै कि हिची एंड फाइनली गोटे निष्कर्ष बाहरला कि हमरो अप्लाइड रिसर्च रो सिद्धांत हला कि पॉवर्टी और ड्रग अब्यूज इज बिकॉज ऑफ these रीजंस पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कोन ओडिसा रो हमरो ई सर्टेन कम्युनिटी लेट्स से कि हमरो बालेश्वर रे प्रॉब्लम होची बालेश्वर रे सर्टेन एरिया रो लोक एई लोक मान को नै कि हम रिसर्च करू एंड कहू कि देखो तुम कम्युनिटी रे ई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अछि देन यू डू दिस थिंग्स so people themselves will be part of the research here what we do is कि आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर रे गोटे रिसर्च हला तार फाइंडिंग को समान कहउछन ओडिसा रे भी यूज करो आमे कहू काई ओडिसा रे यूज करिया ओडिसा रो कंडीशन मे बी आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर थारो डिफरेंट हेजियो आमे एठी लोकल गोटे जदी रिसर्च करू ताले सेटा हेजियो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च so there is a difference between scope majorly the difference is in the scope okay. applied research is a vast area applied research तो देखियो जो टाइप रो रिसर्च हेतियो तार निष्कर्ष से माने गोटे बहुत जनरलाइज वे रे कहिबे जनरलाइजेशन थियो ସେମାନେ କହିବେ कि फार्मर सुसाइड गोटे जनरलाइजेशन कि दिस इज बिकॉज ऑफ these फैक्टर्स एक्शन रिसर्च हेले कोन हो एक्शन रिसर्च कहै कि हम एरिया रे रायल सीमा रे फार्मर सुसाइड एथपे होची बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी दो नाही और सोसाइटल तांकर बैकअप किछि नाही समाने अलोन फील करछन सॉलिटरी फील करछन दिस इज अ सोशल फैक्टर so because of this there is more suicide so what can we do steps to be taken are that हमें social bonding हमर strong करी applied research कोन करियो ना इंडिया सर रे तुम गोटे काम करो ए स्टेप करो they will tell you this is the main difference बुझियो तो कोन कोन Okay, sir. now stages of research process I think I have given this flowchart before right defining the research problem माने हमर actually को topic so this is basically the topic or subject matter कोन ताको चूज करिवु
ताको डिफाइन करियो मींस गोटे ऑपरेटिंग डेफिनेशन तार दिया जहां पर हमें ऑब्जेक्टिवली स्टडी करि पारि राइट जेमती भाव डरखाइम कौन कले प्रथमे तांको तो जणा नथे कि एक्जेक्टली को फैक्टर थिबो बट से गेस करथरे कि सोसाइटल फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स देन पर से आइडेंटिफाई कले कि मे बी सोशल डिसऑर्गेनाइज सॉरी सोशल रेगुलेशन एंड social integration these are the factors so you provide sorry you define what is your research problem ki our research problem is rate of suicide in different societies then only when you have a working definition then only you can proceed with an research तापर हम कौन करियो review of literature means existing data ता through we will go through that then formulate hypothesis then we will say कि suicide is due to we think that suicide is due to these factors that is your hypothesis then you will identify the crucial variables which are the crucial variables IV DV and PVs independent variables they can be multiple dependent variable what effective how many external variable so for your particular subject matter which are the IV DV EVs so when you identify this then you can move towards research design माने कौन exactly को type रो research हमें conduct करी okay तो तार गोटे ब्लूप्रिंट रिसर्च करियर डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जो बात करिया रिसर्च डिजाइन फाइनली यू विल डू व्हाट एक्चुअल रिसर्च कंडक्ट कराबो लेट्स से कि रिसर्च कोन कंडक्ट रिसर्च डिजाइन कोन हला तो डिसाइड कलो सर्वे करियो त अकॉर्डिंगली यू विल डिजाइन की को सैंपल हमें कलेक्ट करियो तो सही सैंपल सही लोगों को जाएगी तुम्हें अंकर ओपिनियन ना सो नाउ यू आर कैरिंग आउट द एक्चुअल रिसर्च एंड कलेक्टिंग द डेटा रिकॉर्ड करछो ताको रेस्पॉन्स टू दैट इज कलेक्टिंग द डेटा then second last stage is data analysis so data को analysis करके देखिए you can do normal kind of analysis pattern तो मैं नीचे देखिए जो बुझी पार भल कथा otherwise you can put it through further statistical analysis also statistical analysis कौन हो ratio proportion percentage higher level ले तुम देखियो कि तार standardized deviation ता standard deviation कौन अछि normal curve रे सेटा कोठी पडुछि ताटू हायर लेवल तो जीवा चाहिबो तुम कहयो कि टी टेस्ट where you will try to understand whether there is significant difference or not these are not at all required basically what I am trying to tell you is ki data analysis means it can be many kind of data analysis that it also includes statistical analysis and finally you will interpret the data means conclusion would draw करियो कि ए data basis रे we think this is the outcome and you will write your report you can write these two as separate steps also drawing conclusion after writing report with experiment broadly these are the steps of the stages of research process okay eta aguru padha itla right I had explained this earlier also I think what example nahi ki explain karti chapter 2 re Yes, sir. wo example nahi thili mor mane podi which example I had explained through these steps manoj kar देखि तो नोट रे अछि ला मोर मोर मने पड़छ स्टेप वाइज नु फ्लो चार्ट रे भी देइथि गोटे एग्जांपल करी गो माने गोटे टाइप रो रिसर्च रे गोटे सॉरी गोटे सब्जेक्ट मैटर रे कोन स्टेप की करे ओके so this part again that is not part of your syllabus so we are going to rapidly go through it consider it only as value addition research method ro different major types कोन एबे तुम कहो कि आउ कोन पुनी रिसर्च मेथड्स अछि now these are the different types of data collection and data analysis DC and DA data collection means को वे रे हमें लोगों को रेस्पॉन्स को और डिफरेंट फैक्ट को गैदर कर करी सेकंड हला से फैक्ट गुडा को केमिति हमें एनालाइज कर करी सो अकॉर्डिंगली देयर आर 3-4 मेजर मेथड्स इन सोशल रिसर्च तीन चारटा मेजर मेथड अछि एथरे बाय द वे फोर्थ मेथड यू कैन आल्सो राइट कंटेंट एनालिसिस इज आल्सो वन ऑफ दोस मेथड्स कंटेंट एनालिसिस कैन आल्सो कम हियर एटा कोन हो रिटन कंटेंट रो हमें थीम को एनालिसिस करियो so we have read about that before today we are going to discuss a few things here कोटा हला इवोल्यूशनरी मेथड कोन बेसिकली से माने डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन द्वारा इंपैक्टेड हिथिले से माने कहिले माने ए जो सोशियोलॉजिस्ट और सोशल रिसर्चर्स से माने कहिले
कि आमे गोटे सोसाइटी देखंती नेचर रे स्पीसीज माने जेमते इवॉल्व करंती ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, सिमिलरली एवरी सोसाइटी आल्सो इवॉल्व्स ओवर द टाइम एंड सोसाइटल इवोल्यूशन डा केमतिया हुए सिंपल रु कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हुए. This simplicity or complexity is reflected not only in their social phenomena, remember, but also in their social organization. For example, आगरु भाबो इंडियन सोसाइटी रे केतेटा ऑर्गेनाइजेशन थिला, सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की केतेटा थिला, सोशल हायरार्की वो पिले को मेजर हायरार्की कोन थिला, कास्ट बेस हायरार्की. पांचटा लेवल थिला, सबुठ तळे थिला अनटचेबल्स, ता ऊपर थिले शूद्रस, ता ऊपर थिला वैश्यस, ता ऊपर थिले क्षत्रियस, ता ऊपर थिले ब्राह्मण्स, राइट. सो ए जो ऊपर चारटा इवन शूद्रस दे वर कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द, they even shudras had a caste, but untouchables are the persons who did not even have a caste, means they are completely outside of the caste system and they were even lower than the shudras. Now these four or five levels, this is a relatively simple hierarchy. एबे भाबो एबे आमो सोसाइटी रे केते कॉम्प्लेक्स हे गलानी सोशल हायरार्की. एबे ईच एंड एवरी कास्ट वितरे एते सारा सब कास्ट अछि, प्लस नॉट ओनली कास्ट, कास्ट साइरे एबे क्लास भी जेते मिक्स हिच. तांकर विदिन वन कास्ट देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग कि तांको कास्ट वितरे भी किए ओडा हायर क्लास किए ओडा लोअर क्लास. सो एटा केमिति हला ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जेमितिया सोसाइटी हमर जते डेवलप हला सेते बेसी सोसाइटी ना कॉम्प्लिकेटेड हे गला. So is this can be called as a social evolution, right? So evolutionary method रे आमे कोन करू, आमे past record और present record को आमे study करू detail ले and we try to understand how over the course of history something has changed. Let's say for example, if you are trying to study certain aspects of a single society, आमे study करियो कि 1900s रे different तारो let's say newspaper report रू हो किंबा अन्य किसी एविडेंस थ्रू हो आमे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द स्टेटस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम्स कोन कोन थिला, जे कोन से गोटे सोशल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन से सेम जिंस को आमे कंपेयर करियो कि 1950s रे कोन थिला देन 2000s रे कोन अछि, देबे 2024 और 2025 रे कोन अछि. So then you show ki okay, this is how it has changed. Let's say here it was x, now there is x1, here 1950 रे थिला x2, 2000 रे हला x3, एबे हला x4. So ए जो हमें शो करियो रिसर्च मेथड रे आउटकम, दिस इज नोन एज इवोल्यूशनरी मेथड. बुझियो से कोन को आउट बहुत Yes, बेसिक sir. आंसर. सेकंड हला कंपैरेटिव मेथड. कंपैरेटिव मेथड माने कोन, बेसिकली you will compare, but you will compare only the selected criteria. The selected criteria means universal categories in each culture. जेमिति कि फैमिली, गोटे कल्चर रे फैमिली तार फैमिली डायनामिक्स कोन, compare it with the family dynamics of another culture. And here you are not comparing in terms of good or bad. Remember this. Good or bad or value judgment जेता आसीयो सेतले ethnocentrism आसीयो. Remember this term ethnocentrism. Yes, sir. Can you tell me what this is? वो बोला ethnocentrism कौन था? पर्टिकुलर रिलीजन की कल्चर ऊपर फोकस है. ओन कल्चरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्रू रे बेसिस रे आमे अन्य कल्चर मान को जज करिया. दिस इज ethnocentrism. जज अदर कल्चर्स. This is ethnocentrism. एटा करियानी. But we can do what? We can compare the universal categories of our culture with the same category of another culture. आमे कहयानी कि आम कल्चर सुपीरियर ए कल्चर टा इंफीरियर, बट वी विल से कि देखो आम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी रे फैमिली टा मोर क्लोजली हेल्ड टुगेदर देन इन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी. एटा तो आमे कहि परिया ना कि इंडियन सोसाइटी रे फैमिली टा जते क्लोज टुगेदर आम सोशल रिलेशन जते क्लोज थाए, अमेरिकन सोसाइटी रे सेते क्लोज न. सो दिस थिंग इज नोन एज कल्चरल रिलेटिविज्म. So cultural relativism is also due to the comparative method developed by the or popularized by the positivists.
पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट माने भी यूज करंती एंटी पॉजिटिविस्ट माने बेसी यूज करंती नहीं पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट माने यूज करंती दिस कंपैरेटिव मेथड Franz Boas had actually promoted Franz Boas is the proponent of cultural relativism term was given by Franz Boas and overall this comparative method was used more by the positivists. Third type of method is historical method. देखो historical method that is also similar to evolutionary method. The difference is that historical method ta हमें previous society रो we are not that much interested in the current society. We are more interested in the माने आमे changes उपरे भी एते interested no. Evolutionary method रो focus है कि केमितिया change is. That is the dynamism. Here you write one point dynamism. Dynamism of the society that is of importance means केमितिया change is. Historical method कौन हमें गोटे past गोटे society और past phenomenon को accurately we will describe it and we will explain it. That is our goal. So here also there is dynamic nature because if the past को हमें देखो जो ताले सेथरे भी change हमें जानी परिया कि ताकरा current केमितिया change is. But the focus is on what? Focus is on the past. Here focus is on what? Evolutionary method रे past to present to केमितिया change is. That is the difference. So there are two types of such sources. Historical method or sources on two categories. Type तो कहेगा कथा ना two categories of sources. गोटे है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स गोटे है ऑफिशियल और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. पर्सनल डॉक्यूमेंट कौन हो डायरी बायोग्राफी लेटर है अदर पर्सनल रिकॉर्ड लाइक हेल्थ रिकॉर्ड्स ता थ्रू रे हम कौन हिस्टोरिकल माने सेही टाइम रे कौन आगरू गोटे सोसाइटी थिला और सोशल फेनोमेनन थिला ताको हम एक्सप्लेन करियो ट्राई कर. एंड द अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज public document or official document, journals, magazines, newspaper articles, website articles, etc. Now, after this class, do one thing. NCERT history टिके जाइए देखियो बही देखियो NCERT history रे almost सब chapter रे समाने कौन करथिए गोटे न्यूज़पेपर रिपोर्ट देइथिए. Let's say 1930s रो हला CDM जतळे होतला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होतला जेतेबेले सॉल्ट सत्याग्रह होतला सेतेबेले सेही टाइम रो इंडिया रे न्यूज़पेपर रे लेट्स से ट्रिब्यून रे कोन आसीतला आर्टिकल कोन हेडलाइन आसीतला कोन आर्टिकल आसीतला तार गोटे देखे फोटो देखे. हैव यू सीन दिस और नॉट एनसीईआरटी? Yes, sir. So this is nothing but an example of what? Historical method. जा थ्रू रे हमें data gather करछे and we are trying to understand what was the time period back then, what was the society back then. So एक केस रे कोन हला जदि सम न्यूज़पेपर और जर्नल गोटे आर्टिकल हिंचांदी पब्लिश ताल that is what they are using public document. This is what they are using. On the other hand बेले बेले देइते देखियो महात्मा गांधी कर लेटर टू जवाहरलाल नेहरू सेतरे लिखा है डियर जवाहरलाल नेहरू आई एम वेरी you know very concerned about this riot happening here and there. So this is a what? This is a personal document and this is also a source of historical method. Broadly two categories of historical method. बुझे उसे कौन कौन से? Okay, sir. Very good. So पिलाने लास्ट गोटे पॉइंट हमें नेक्स्ट क्लास रो कौन करिवु टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस स्टार्ट करिवु सेतरे स्टार्ट हिची पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. बट सर्वे इज आल्सो a very important topic. I will not explain in detail but I will give you the notes. So तमे कौन करबे सर्वे पार्ट टा खाली बस पढी लेथियो तापरे पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन I will start explain because survey part is not part of your syllabus, only the participant and non participant observation is there. So from there we will take up the next class. Now for the time being, do you have any doubts before Ajiro class? Otherwise content was this much. So if you have any doubts, please ask. Ajiro class is which doubt ଅଛି? Anyone? By the way, thank you for your very dedication and enthusiasm. Sandhya Rani, Sonalika,
सोनालिका विश्वाल, सोनालिका गिरी, रुपेश, मधुस्मिता, स्मृति रेखा, सूर्य, प्रियंका एंड प्रदीप. So